हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। जहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना डिस्कशन बेस्ड ऑन BFM यूनिट नंबर 20th, which is all about treasury product. Okay, in our previous session where we already talk about money market product as well as forex product. So today we will talk about today we will continue this particular डिस्कशन एंड थोड़ा सा एरिया आपका रह गया था तो उसको पहले आपका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो मॉड्यूल सी विच इज ऑल अबाउट योर ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड यूनिट नंबर 20th is all about the treasury product which cover these particular instruments. So product of foreign exchange market and money market, so these two we already done. So today we will cover securities market product as well as global and domestic market which include ADR and GDR. Okay, so I hope आपने पिछला सेशन सभी ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। So now today we will continue with the domestic and global market. Nowadays, like whenever we talk about this particular area, so जैसे आज की डेट में बहुत सारे आपके डोमेस्टिक टू अब्रॉड, अब्रॉड टू डोमेस्टिक, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. So like we have FDI, foreign direct investment, we have FII, we have ODI as well, ठीक है, overseas direct investment, and even we have ECBs, ठीक है, external commercial borrowing. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने पास्ट में आपका डिस्कस किए हैं, तो ये ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ठीक है। So let's start with the basic introduction. So first one we have FII, ठीक है। So ये हमने कल आपका स्वैप तक पढ़ा था, ठीक है। So now first one we have FII, foreign institutional investments. So nowadays like इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं, सो वी हैव ह्यूज पार्टिसिपेशन फ्रॉम एफआईआईज ऑल्सो, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आपका करते हैं इन दी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, डेट मार्केट इन अदर एरियाज. So foreign investment flow in India to India by a way of foreign direct investment, that is a long-term project related to like related investment, and portfolio investment, that is in stock market, in debt market for short term compared to this. Foreign institutional investor who include investment bank and hedge funds invest mainly in portfolio investment. So foreigners usually they invest in Indian market by two ways. Major categorization. One is FDI, where they generally invest in the productive capacities through joint ventures or through wholly owned subsidiaries. And another one is called portfolio investments. Okay, तो जहाँ पे बेसिकली वो आपका जो शेयर मार्केट है, मतलब जो हमारी इक्विटीज हैं, या फिर आपका डेट मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन सब एरियाज के अंदर आपका इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट एफडीआई एंड एफआई, वी हैव एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर ऑल्सो, ठीक है। So ADR, GDR issued by Indian companies abroad, and IDR is basically आपका when outside Indian companies they invest or they raise funds from the Indian market. Okay? So ADR which are limited to US market, GDR they have global presence. Okay, majorly they get traded in Luxembourg stock exchanges. और ये सारे हमने काफी डिटेल में पढ़े हैं पास्ट में, ठीक है, मॉड्यूल ए के अंदर, तो आई होप सबको याद होंगे, ठीक। So Indian companies mobilize foreign currency resources by issue of equity in global market. The holder of ADR or GDR, foreign investor, have an option to sell their holding in domestic market and receive proceed in foreign currency as well, right? तो ADR आपका जैसे like मैंने आपको एग्जांपल दिया था इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस जिसने अपने आप को लिस्ट किया कहाँ पे, NYSE के अंदर, ठीक है। सो जो फॉरेन का आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है उसके थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर्स दे जनरली इन्वेस्ट in the shares of our domestic companies, ठीक है। If it is listed in US, so it is ADR, dollar dominated, and if it is listed in majorly in Euro area, so they are generally get listed in Luxembourg Stock Exchange, and again they get traded in dollar, like GDR also dollar dominated, but it can be in some other currency like Euro also, right? So ADR and GDR के थ्रू भी आपका funds raise होते हैं, ठीक है। Then external commercial borrowing, when companies are raising funds from outside India, Indian companies are raising funds from outside India, it can be in
foreign currency denominated as well as INR denominated, right? So Indian companies can borrow in global market from bank, syndicated loan, or issue debt paper like bonds, floating rate note and bonds within the guideline issued by RBI to fund their domestic or overseas project. ठीक है? तो जहाँ पे ECB को तो हमने पूरा एक यूनिट पढ़ा था, ठीक है? आई होप यू गाइज रिमेंबर अबाउट द मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड या फिर अदर जो भी एस्पेक्ट आपके इसके थे, वो सारी चीजें जिनको हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है? नाउ फॉरेन करेंसी फंड्स ऑफ बैंक, ठीक है? फॉरेन करेंसी फंड्स ऑफ बैंक बैंक तो जैसे आपका जैसे नोस्ट्रो अकाउंट या वोस्ट्रो अकाउंट या अदर्स जो भी है, ठीक है? So bank can use their FCNR, foreign currency non-resident deposits, funds for invest in overseas market as well as for domestic lending in foreign currencies. They are also permitted to borrow or invest in overseas market within a ceiling. Presently, 100% of unimpaired tier 1 capital, minimum 10 million US dollars, subject to guideline issued by RBI. Bank generally use this facility to extend short-term loans up to 6 months or lower, right? So that is the next one. Then we have special facilities for exporters to exporters. तो एग्जिम की पॉलिसीज हमने पढ़ी थी बहुत सारी, ठीक है? या ECGC के अंदर आपका जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है? सो एक्सपोर्टर आर परमिटेड टू होल्ड एक्सपोर्ट अर्निंग इन फॉरेन करेंसी अकाउंट, या जैसे अगर आपको याद होगा डायमंड डॉलर अकाउंट था, या फिर ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपका, ठीक है? डेजिग्नेटेड EEFC, दैट इज एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट. Bank are allowed to extend pre-shipment and post-shipment finance to exporters in foreign currency in four major currencies. Generally, these are dollar, yen, yuan, and pound. Bank can borrow foreign currency for the specific purpose of financing export credit, including discount to export bills also, right? So this is also correct here. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फ्री रेमिटेंस फैसिलिटी विच इज नोन एज LRS स्कीम, ठीक है? So which was our second unit of module A. So that is known as liberalized remittance scheme for individuals including minors, and they can remit money up to 2.5 lakh US dollar per financial year for capital account transaction as well as current account transactions, ठीक है? So February 4 2004 जब लॉन्च किया गया था, परमिसिबल एरियाज, नॉन परमिसिबल एरिया, सेमी परमिसिबल, शेड्यूल 1 2 3 सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है? सो इंडिविजुअल आर नाउ परमिटेड टू remit overseas freely without RBI approval up to 2,50,000 US dollar in a financial year under RBI LRS scheme for any purpose. They may choose to invest in fund in global debt, equity, or simply spend money for consumption purpose also, ठीक है? That means their remittances can be in current account as well as capital account, right? तो ये बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया. आई होप यू गाइस लाइक, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि like if you complete your module A and module B thoroughly, so your 60% downside 60% preparation will be done, right? So ये आपका उसके प्रूफ है, ठीक है? अब ऐसे बहुत सारे प्रूफ मैं आपको देता रहूंगा टिल द एंड ऑफ मॉड्यूल डी. अब ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल सी और डी का वेटेज नहीं है, मार्क्स वाइज दे हैव इक्वल वेटेज, ठीक है? हमेशा ध्यान रखें. Securities market protect like equity, debt, and all things. So investment business in is an important part of integrated treasury, and is composed of buying and selling of product available in securities market. Investment being a subject in itself, we would outline briefly the investment product available to bank treasuries, and the subject is to be studied in detail by those who would like to specialize in investment business also, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपका, जिसमें अगर हम लोग बात करें जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनको हम लोग सोवेरियन डेट के नाम से भी जानते हैं, दो सिक्योरिटीज विच जनरली गेट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज लॉन्ग टर्म डेट, राइट? जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके होते हैं. सो आर इश्यूड बाय पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ RBI, पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ RBI on behalf of government of India. State government can also issue a state development loan through RBI. इसके अलावा government securities are also are sold through
Okay, just a minute, huh? Right. So, government securities are sold through auctions conducted by RBI. So, NDS जो हमने कल ही आपका डिस्कस किया था, ठीक है. Interest is paid on the face value of the bond, or even usually they get discount issued on discounted basis in others. ठीक है, बहुत सिंपल सा आपका जैसे जो डेट मार्केट आपका है, ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज एन पार्ट ऑफ दिस वन. Corporate debt paper is also part of this scheme. So where basically like as we know bonds are also issued by the corporate houses. ठीक है, जो companies आपके हैं they generally issue the bond also. Just a minute, sorry. Sorry, guys. So, corporate debt paper is similar to government bonds, but they get generally issued by the corporate houses. ठीक है, जो companies आपकी हैं, they generally raising funds through these particular ones, simply known as corporate bonds, right? So, refer to a medium and long-term bonds, debentures. So, bonds and debentures, I hope everybody knows the difference between these two. डिवेंचर्स आर यूजुअली सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इनके अगेंस्ट में सिक्योरिटी रहती है, एंड बॉन्ड्स के अगेंस्ट में दे आर लाइक मोस्टली उनके अगेंस्ट में सिक्योरिटी आपका नहीं रहती, कोलेटरल्स आपके नहीं रहते, ठीक है. Which are tradable. There are also referred to as non-SLR securities to distinguish the corporate debt from government securities. मतलब like companies they cannot like even suppose that अगर बैंक ने इशू किया so they cannot use these particular securities, या अगर कोई बैंक किसी कॉर्पोरेट हाउस का बॉन्ड अगर खरीद रहा है सो दे कैन नॉट show those type of securities as a in their SLR calculation, right? And other approved securities which are eligible for meeting SLR requirement in this. Tier 2 bank bonds issued by bank also
fall under this particular category, right? So corporate debt papers की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट कमर्शियल पेपर, तो कमर्शियल पेपर में जैसे A3 रेटिंग्स की रिक्वायरमेंट्स है, वैसे ही यहाँ पे भी आपका, ठीक है, जो रेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो यील्ड ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड, corporate debt or bonds differed from instruments to instruments depending on the credit quality. That is, higher the credit risk, higher the yield. Most of the debt issued have credit rating by the credit rating agencies registered with SEBI itself. So same चीज यहाँ पे भी आप करिए. If any company is coming with their debt papers or bonds, so first they have to like disclose about their ratings. अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, जैसे कमर्शियल पेपर में आपका A3 रेटिंग होना जरूरी है, या 1000 करोड़ से ज्यादा का अगर आप रेस करो तो वहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट्स होता है. बट यहाँ पे वो चीज ना हो केयर के, क्योंकि 10 ईयर्स के अगर या 5 ईयर्स के लिए इशू कर रहा है, सो इट कैन बी चेंज. बट वो अब अगर किसी की क्रेडिट रेटिंग वीक होगी, ऑब्वियसली मतलब उसमें रिस्क ज्यादा है, तो वहां पे उनका रिटर्न भी क्या होगा, यील्ड आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट विल बी हायर साइड, ठीक है. So these are the credit rating agencies which can be used by companies to disclose about their ratings, right? So they generally work as per the guidelines of SEBI as well as RBI, right? So जिसमें आपका credit rating information service of India Limited, then ICRA Limited, Credit Analysis and Research Limited, then we have Fitch Rating India Private Limited, Acute Rating and Research Limited, then we have Informatics Valuation and Rating Private Limited. So these are some rating agencies. Apart from this, companies, they can also use like they can also conduct their ratings through 3 international companies. These are like, one is Fitch, okay? One is Fitch, the another one is S&P Standard and Poor, and third one is Moody's, right? So these are the international rating agencies which is also approved by the RBI as well as SEBI, because they do follow the requirements of this rating criteria, right? तो इनके द्वारा रेटिंग से, इनकी रेटिंग के बेसिस पे बेसिकली बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स दे जनरली मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट. सो डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करते हैं, सो दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेट बॉडीज literally with a charge on a specific asset. The literal meaning of has been lost in practice, and debenture and bonds may be issue with or without security, but earlier it was like, मतलब से यहाँ पे आपका अभी ऐसा नहीं होता, but the core concept said कि debentures are with security and bonds are without security, right? In practice, company law required that debenture issued by companies are always secured, otherwise they will not they will be subject to regulations pertaining to public deposit. Hence debenture are generally secured by mortgage or with a floating charge or a lien on asset, although the latter security is more of the technical nature to given a comfort to the investors. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताई चीज कि द बेसिक जो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन किए गए, इनका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट, मतलब दे डिवेंचर आर काइंड ऑफ बॉन्ड्स, सेम बॉन्ड्स के फीचर होते हैं, बट दे आर usually secure प्रोडक्ट, ठीक है. उनके अगेंस्ट में आपका कंपनीज दे हैव टू पुट सम सिक्योरिटीज, राइट. Another product we have equity. So equity, where we have two type of equities, sorry, shares I hope everybody knows, ठीक है. तो shares क्या होता है आपका, share is a part of ownership, right? So let's say like जैसे कोई भी कंपनी अपने आप को पब्लिकली लिस्ट करती है, so they generally sell a portion of their ownership to the general public in the form of shares. Now these shares are divided between two parts majorly as per section 44 of Companies Act 2013. One is equity shares. They are also known as or they called common shares, which is available freely available on the stock exchanges. You can like by opening demat and trading accounts, you can buy any company's share prices with their as per their current market prices, right? Another one is preference shares, which get preferences over equity shares. As their name state, preference, they get preferred over equity shares. They have two major preferences over equity share. One is at the time of dividend distribution, they get preferences. Another one is at the time of winding up or liquidation, they get preferred over equity shares, right? So equity shares, section 43 says we have two type of equity shares. One is voting right, another one is with differential right, which can include dividend, voting, and other right, which is stated on the like at the time of issuing.
preference shares capital is the capital which enjoy preferential right with respect to dividend payment at a fixed rate and return of the capital on winding up of the company. ठीक है, जो जो कंपनी वाइंड अप आपकी होगी तो उस समय जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबसे पहले फंड्स आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा. सबसे पहले का मतलब यहाँ पे है ओवर इक्विटी शेयर्स. यूजुअल कैसे होता है, जो प्राइमरी डेट है वो आपके पहले पे ऑफ होंगे, ठीक है, लाइक सैलरी, रेंट एंड अदर्स, बैंक लोन्स एंड अदर्स. देन ओवरऑल आपका जब डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ इन दोनों में पैसा बटेगा, सो फर्स्ट प्रीफरेंस शेयर्स विल गेट प्रीफरेंसेस, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट का मतलब इनसे आप इन दोनों में से, राइट. सो preference shares are further categorized like they have certain conditions, ठीक है. As per these particular conditions, it can be further categorized among 8 parts. ठीक है, 8 भागों में इनको बांट सकते हैं. पहला, first one is cumulative, another one is non-cumulative. ठीक है, cumulative and non-cumulative. Cumulative का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे let's say there is a company XYZ Limited, ठीक है. So जिसने आपका 2021 के अंदर they did not disclose the dividend, ठीक है, they did not distribute the dividend. 2022 again suppose that इन्होंने dividend नहीं दिया. 2023 is the year of dividend, ठीक है, जहां पे ये dividend आपका issue कर रहे हैं, ठीक है. So in case of cumulative, अगर ये दोनों साल profit में थे तो इन दोनों सालों का जो dividend है we will add this particular one plus this year dividend, ठीक है. यहाँ का add करके profit का जो भी portion है and यहाँ पे तो वो cumulative में. If it is non-cumulative type of preference shares, so investors will get dividend on only on the profit earned in the year 2023, right? So right to claim dividend does not lapse when there is no profit or inadequate profit and is carried forward to next year is cumulative preference share, while right to claim dividends lapse in case of non-cumulative share. अगर non-cumulative है, सो अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, सो इट विल बी लैप्स एंड यहाँ पे वो आपका मिलेगा. रिडीमेबल और इरिडीमेबल, उसका अपोजिट आपका, ठीक है. सो रिडीमेबल व्हिच कैन, रिडीम का मतलब होता है बाय बैक, ठीक है. सो दीज आर द प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन बी बाय बैक और बॉट बैक बाय द इशूइंग कंपनी आफ्टर अ स्टेटेड टाइम ड्यूरेशन. जैसे किसी कंपनी ने आपका प्रेफरेंस शेयर इशू किया, ठीक है. So after 5 years, suppose that they have this right. तो this right belongs to company, issuer आपका, ठीक है. वो चाहे तो 5 साल के बाद ये जो प्रेफरेंस शेयर्स उन्होंने आपका, यूजुअली दिस बिलोंग्स टू द क्लोज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है. सो दे कैन बाय बैक फ्रॉम देम, राइट, बाय पेइंग देयर मनी बैक, राइट. इन केस ऑफ इरिडीमेबल शेयर्स, they cannot be redeemed. Issuing company cannot force to the investors to sell their shares back, right? So while which can be redeemed in buyback subject to fulfillment of certain condition laid down in section 55 of Companies Act 2013. Section 55 subsection I of the Companies Act 13 prohibit the issue of preference shares that is irredeemable, right? तो इस तरीके से आपके जो पॉइंटर बनते हैं. इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. सो पार्टिसिपेटिंग इज सिंपली विद सम एडिशनल कंडीशंस, लाइक जैसे इंश्योरेंस होता है ना, एक देयर इज अ सिंपल इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके ऊपर कुछ राइडर्स हम लोग ऐड कर देते हैं. दिस इज सिमिलर लाइक टू दिस. जैसे सपोज दैट कंपनी XYZ दे इशूड सम प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पे इन्होंने बोला कि हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, वट एवर प्रॉफिट वी विल अर्न, उसका 8% वी विल गिव टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है. कंपनी XYZ कम अप विद सम प्रेफरेंस शेयर्स एंड दे प्रॉमिस द इन्वेस्टर्स whatever profit we will earn, we will distribute 8% among these number of preference shareholders, ठीक है. So this is a simple one. Now they come up with another condition. If our profit is more than 5 crore, so if you'll pay per preference shares 500 extra or whatever the condition, we will pay you 2% additional dividend, ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लगा दिया कि नॉर्मल तो ये है, अगर आप हमें इतना रुपए पर प्रेफरेंस शेयर्स सॉरी एडिशनल देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं, तो अगर हमारा प्रॉफिट होगा 5 करोड़ या उससे ज्यादा, वी विल पे यू 2% एडिशनल डिविडेंड. नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर. वन हु अडॉप्टेड दिस एंटायर पैकेज, उसने ये पैकेज आपका लिया, so that is participating. Another type of investors who is investing in this one only, right? उनको मतलब नहीं है आपके प्रॉफिट 5 करोड़ के प्रॉफिट से अदर्स, ठीक है. So which are have a right to participate in surplus remaining after the payments of equity capital in case of this. तो ये जैसे आप करेगा, ठीक है.
convertible or non-convertible. Here, like convertible shares means, preference shares means these are the shares which can be converted into equity shares after a certain time duration. ठीक है, तो मतलब राइट बिलोंग्स टू दी इन्वेस्टर्स. ठीक है, यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड, राइट, which would be convertible into or exchange with equity shares at a later dates with or without the option the preference shareholders. ठीक है, तो इस तरीके से तो ये चार टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड दिस इज इट, राइट. तो ये कल वाला सेशन जहाँ पे हमने मनी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट को डिस्कस किया था. एंड आज का जो सेशन था, रिमेनिंग पार्ट आपका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेट एज वेल एज योर सिक्योरिटीज मार्केट. ठीक है, तो आपका जो कोर्स कंटेंट दिया है उसका 100% मैंने कवर अप किया है, कुछ भी चीज आपके नहीं छोड़ी है. यू कैन मैच विद योर मैकमिलन बुक ऑल्सो. ठीक है, तो सारी चीजें लाइक आई एम नॉट लीविंग एनी पार्ट की जो आपको एग्जामिनेशन में परेशान करे. तो मॉड्यूल सी में हम लोग एंटर कर चुके हैं. आई होप आप भी मेरी स्पीड के साथ ही आगे बढ़ रहे होंगे. ठीक है, और अभी देखो क्या है, BFM and BRBL की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं. वेरी सून फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल हैव क्लासेस बेस्ड ऑन ABM. और मैंने आपके लिए इतना मतलब लाइक एक ऐसी पर्सनैलिटी खोज के लाया हूँ अपने मित्र से जो लाइक शी इज PhD इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. ठीक है, स्टैटिस्टिक में PhD है. तो जो आपका स्टैट वाला पोर्शन है ना, वो मतलब लाइक दैट विल बी मक्खन आफ्टर दैट वन. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं आपके लिए. थोड़ा सा आप लोग अपने साथी बैंकर्स के साथ शेयर जरूर करें. और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं. हर एक सेशन के बाद वो बेसिकली हमें मोटिवेशन देता है. कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशन है, वो जरूर शेयर कीजिए. ठीक है, इसके अलावा और भी आपके कोई कंसर्न है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो जहाँ पे आपको हमारे दिशा मैम भी मिलेंगे और आपके जो भी कंसर्न है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे. आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम. ठीक है, so this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all. Have a nice day. Thank you.